Hi friends, after two of my introductory videos, I am back again to share an experience with me that we had in a conversation while a gentleman few days back. We were sitting somewhere and discussing about what are the views, how the things will move due to this COVID-19, चीज़ें कैसे चलेंगी, बिजनेस कैसे होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे रहेगी, जनरल थिंग्स that the people discuss nowadays. तो देन ऑल ऑफ अ सडनली ही आस्क्ड, विकास जी एक बात बताइए कि हम लोग जो थोड़ा बहुत पैसा है हमारे पास उसको कहाँ पर रखें अभी। मैंने पूछा सर ये कैसा सवाल है कि कहाँ पर रखें, मतलब यू हैव वेरियस ऑप्शंस जो आप रख सकते हैं। देन ही सेड कि नहीं देखिए अभी जो बैंक्स की हालात चल रहे हैं जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिन ब दिन कम होता जा रहा है, शेयर मार्केट जो है वो इतना वॉलेटाइल है, इतना फ्लक्चुएट करता है डेली कि उसमें इस समय पैसा इन्वेस्ट करना इज़ नॉट सेफ, क्योंकि जनरली जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लमसम में इन्वेस्ट करते हैं। देन आई सेड कि सर या आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जस्ट फॉर अ डिस्कशन सेक। देन ही सेड नहीं भैया, सोना तो इस समय सबसे ऊंचे रेट पर मिल रहा है, तो इस समय कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसको लेगा। तो आई एग्रीड विद हिम। मैंने कहा यस ये बात तो है सर, कि सोना इस समय बहुत ज़्यादा ऊंचे रेट पर है और इस समय लेना की कोई तुक नहीं बनती है। और जहाँ तक प्रॉपर्टी का सवाल है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, तो पीपल फील कि यार अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमारा पैसा फंस जाएगा, पता नहीं कब बिके, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय लोगों को पब्लिक को दिमाग में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लेके एक नेगेटिव थॉट जा रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन और कम हो जाएगी, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ वाइबल ऑप्शन। और घर में रखना तो यू ऑल नो कि आजकल कितना सेफ है। तो देन आई थिंक कि ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत सारी चीज़ें। देन आई गिवन हिम अ पीस ऑफ एडवाइस विच आई एम शेयरिंग फॉर द बेनिफिट्स ऑफ माई ऑल द व्यूअर्स। And please, I request you to take a look in the following presentation for clear understanding of the concept that we discussed there. For investment purpose, few logics needs to be followed and it shouldn't be done in a haphazard manner. We'll understand this through an example in this presentation. Suppose you need to invest INR 100. You have taken this amount for the ease of understanding. Although there are many factors for deciding upon the investment which depends from person to person, however, we have taken few generic factors under consideration in this example. Few generic examples we have considered here are liquidity, risk appetite and time frame of investment. In this example, we have taken liquidity to be 50%, risk appetite is a moderate risk for the customer and time frame of investment is any period greater than 2 years. We will be investing 100% liquid funds and slowly and gradually move to large cap funds. We will ensure 50% of funds in liquid all the time to ensure the liquidity to be maintained at 50%, and we have selected large cap because the risk appetite as well as the time frame suits that large cap funds. For example, if market drops from 1% to 2% between the range, we will be investing 5% of the amount each session it drops. We need generally 10 sessions to move 50% funds on an average. That 10 sessions we can have it in 40 days or 25 sessions roughly, because there are 5 sessions in a week. Now we need to keep a watch on the investment. If we feel at any point of time that the net returns are as per our expectations, whatever we are expecting for the annual return, if the returns are matching that, we can quit from the investment and start afresh. Now you will be asking that why we shouldn't continue and we want to start afresh, because if we continue, the profit will only be a notional profit. So to keep it out of the book and keep the profit in our own pockets, we need to quit the investment and start afresh. Friends, the method which we have seen in the presentation is a tried and tested one, and do believe me, if we take care of certain norms, certain rules while investing and do it in trenches, believe me, wealth creation in these tough times is also easy. It's not that hard to make a wealth like we feel कि हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी या बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग इन्वेस्ट करना पड़ेगा या प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट once we need to understand it. If we understand, it's very easy. In case of any query or concern regarding this presentation,
or any other thing, just drop me a comment in my comment box, and I'll try to revert as soon as possible and to the best of my capacity. Till then, bye bye and take care.